doing well and we believe that yes, it has a future and we will get higher returns if we go forward. Then we can even look at horizons of 7 to 10 years. That's great. Thank you. I'm saying good. So yeah, I think I'll reiterate what you said. That is something we focus on. One is taking partial exit. So if we come in at C, we try to look towards exit at A plus or B onwards, C to C. And our focus is on because it's time horizon is important. So we look at the IRRs more closely and get involved in the partial exits where we feel that we should at least get a principal back and then start working on the other side in later years. Thank you so much, ma'am. So it was all from my side. Thank you for such an insightful interaction. Thank you so much. Thank you. They're not ready. Mighty reserved from This is from Exchange Studio. Hi, Natasha. Sounds good. The VC. Yeah. What about you? I'm founder of Exchange Studio. It's India's first sports stock exchange, fantasy sports stock exchange. Yes, I'm into games. Is it real money? Yes. All right. It's good. I think you're aware of it. Last time we went to Karnataka and we challenged Karnataka police at 2020. Right now there's an issue going with the Tamil Nadu. Again, we will challenge it and we will do it. Now it's not a big deal for us. But right now there's a issue going on with the GST. That 21,000 per meter, DGGA versus TN Sky. Yeah, they've said they'll impose GST on gaming, right? Yes, it's a DGGA versus GST. So, so I hope we will be in that case also because we have 6 years jurisprudence, that's Satyanara judgment. So the contention of GST is when there is stake involved, it's not a game of skill, it's a game of chance. But in law, there's nowhere is mentioned that if there's stake involved, it's game of chance. In fact, कोर्ट में भी 6 दिन हुआ आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो है ESG केंद्र बैंक का 6 दिन लगा तो वही डांट था क्योंकि हम लोगों की तरफ से वी हैड मुकुल रोहतगी, अरविंद लता, सज्जन पोवया, अभिषेक मनु सिंह भी एंड उदय होला ऑल द टॉप शॉट्स एंड इन वेंकटरमन अकेले क्या करेंगे एंड अभिषेक मनु सिंह भी का एक बहुत बड़ा आदत है लास्ट पे जाके जज को उकसा देता है ताकि जज अपने आप ही डिफेंडेंट को कहे कि मिस्टर वेंकटरमन प्लीज शट अप. Actually, the judge is very reasonable. Main thing he understands what is game of skill and what is game of chance. I have seen a lot of judges, but this guy is very reasonable. It's in the Supreme Court now? No, now right now the matter is in Canada. अब मेरे पास DGGA आया 10 तारीख को आया था करीबन 3:30 बजे फोन आया कि आपका ऑफिस में मैं तो दो महीने से आपका स्वागत करने के लिए जा रहा हूँ फिर आप पहले आदमी मिले जो कह रहे कि स्वागत करने के लिए मेरा कागज क्या है क्या हुआ रात के 9 बजे सेट की काम करो लोकल डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में भेजा था मेरे कोई जल्दी नहीं बैठे रहो सुबह 6 बजे क्योंकि मुझे तो अपने फेवर में लिखवाना है ना पंचनामा मुझे पता है कोई टैक्स एविशन हुआ नहीं तो उठा के रखा जान मुझे सुबह 5:45 इन्हीं पे मैं खाना वगैरह मंगा रहा हूँ मेरे को कोई जाने का जल्दी नहीं
आपको जितना देखा जाए उससे ज़्यादा तो मैंने जानबूझ के 1-1 घंटे देर से दिया, क्योंकि मुझे भी पता है क्योंकि आखिर में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा एंड वेयर आर ऑलरेडी। अगर हम लोग 2 साल से इस मैटर को डिले कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हुआ की इकोनॉमी चली रहा है डेल्टा की वजह से एंड डेल्टा इज आल्सो विद अस। इन द एग्जीक्यूटिव कंपनी देयर आर 7 कंपनीज एक्सचेंज 22 एमपीएल टाइम्स to खुद invested MPL. Another one is UP, another one is GameStop, another one is Delta. तो अगर हम लोग सिर्फ इतने मिलके पूरे इंडस्ट्री अगर 2 साल से डिले करा रहे चीज़ ये भी कर लेंगे, कोई नहीं देख लेंगे। और बात रही 20% की, वी आर विलिंग टू पे 20% on GG, बट देयर कंटेंशन इज यू नीड टू पे 28% ऑन डिपॉजिट। तो जो पैसा अपना है ही नहीं उसमें हम कहाँ से जीएसटी देंगे? तो ये जीएसटी लॉ के खिलाफ है ना। Technically you are saying कि you give us GST on debt, liability में अब दो। We'll start with the Spark Tank. So, good afternoon everyone, and I welcome you all to Bennovate Spark Tank 2022. So, Spark Tank is our where founders meet funders, a weekend competition where we have 8 teams pitching today out of 200 teams that sent us presentations from all over India. We even had submissions from other countries like UK, but we couldn't accommodate them because of travel. So, but let's go. We have people from all over India pitching today, and introducing the jury today. On panel, we have Mr. Maiden, who is an industry professional with investment experience of more than 20 years in private equity and venture capital. He is the founder and chief mentor at Venture Gurukul. Under his leadership, Venture Gurukul has become one of the top early stage investors and mentoring platforms in India. He co-founded Smile Interactive Technologies, which is among the leading internet groups in India and Southeast Asia. At Smile, Sir has helped build and escalate many early age startups and ventures with very rewarding exits to strategic players like WPP, Yahoo, Dentsu, Facebook, etc. And the ventures have investments from marquee investors like Sequoia Capital, DSP Global, etc. He has led private equity investments at Brand Capital of Times of India and structured finance across various businesses in the growth and expansion phase. Introducing the next person in the panel, we have Ms. Natasha from the MD at Unlimited Capital. Ma'am who has co-founded Unlimited Capital to have an opportunity to drive innovation and help create world-class transformative businesses which create value for the investors. She co-founded Venture Gurukul, an early-age startup proprietary investment vehicle. She's the director at Bombay Stock Exchange. Listed electoral finance, providing the board with strategic insights on VC investments in India. At Electoral, she's a member of the Audit Committee, Remuneration and Appointments Committee, and Stakeholder Relationship Committee. Prior to that, she was an entrepreneur in residence at IndiaPetrochem.com, wherein she successfully built and launched India's first market intelligence platform for petrochemical and chemical within short duration. The next person in the panel is Mr. Gurishta. He is a co-founder of Exchange. So, scene, we have any lines. The Spark Tank will entail 5 minutes of pitching and 5 minutes of Q&A. At 5 minutes of
the nearby villages for the agricultural waste, which we will be collecting and converting into biochar. And biochar is our carbon removal technology. And second, we have onshore CDR. So along the shore, we have mangrove ecosystem protection and restoration solutions. So this comes under blue carbon. And at G20 summit, we have our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, along with other world leaders, planted mangrove saplings in Bali. So this is called the Godavari and Krishna mangrove ecosystem, which is the fifth largest mangrove ecosystem around the world. So we will be restoring mangrove forest, which comes under blue carbon, under our green wall initiative. We plan to plant nearly 1 lakh mangrove plants by July 26, 2023, which is the International Day of Mangrove Conservation. And these are the benefits of mangroves. And that is our solution here. And coming to our final solution, we are developing offshore CDR based on macroalgae and microalgae CDR, which is based on boosting the biological carbon pumps that have been happening on this planet for billions of years. So these are the features of our offshore CDR system, and that will be deployed here. So you can see we are developing a network of natural CDR solutions, and also we are developing other sustainable solutions within our organization to fight climate crisis. Coming to our unique value proposition, apart from the development of ocean-based CDR solutions, we are also developing sustainable solutions to fight climate crisis, as well as protecting and restoring ecosystems around us. Now coming to the market validation, our target market is carbon removal market. So for every ton of CO2 captured and removed, we generate a carbon removal credit, which is our monetary end product. And demand for carbon removals is generated by individuals, organizations, companies, industries, and subnational governments. And it is a billion-dollar industry which is demanding global attention. And these are the news articles demonstrating that the carbon removal industry is going to be a key industry in fighting against climate change. And coming to market analysis, the carbon removal industry is projected to scale up by 100 times by 2050. And currently it is having a huge problem because the demand is in gross disproportion with the available supply. And this is a billion-dollar industry that we plan to capture within India. Coming to the business model, current price for each offset at infill birth is around $180 per ton, and as we scale up, it is projected to fall to around $60 per ton. And for a primitive plant, where we can sequester 1,000 tons of CO2, we generate a revenue of $180,000. And as we scale up, we increase our impact as well as our revenue. And these are the features of our carbon removal grades. They are safe and permanent, natural and cost effective, flexible and scalable. Coming to our go-to-market strategy, we build and perform CDR, then we verify and sell our carbon removal credits, and we scale up our systems. Our current strategy is to approach direct early customer purchases such as Frontier, who are giving $500,000 of pre-purchase agreements. And as we scale up, we want to approach Puro Earth, which is a carbon removal marketplace that will be paying us our carbon removal credit value. And in the future, Indian corporate ecosystem is getting ready to be untapped and is currently unexplored. And this is our business model canvas. Coming to the competitive landscape, we are developing carbon dioxide removal solutions which are at lower cost but with higher impact because we are developing and enhancing natural solutions. So this is our unique selling point against our deep competitor analysis. And in the realistic success scenario, we could be one of the top 15 CDR. In a best case scenario, we could be the global leaders. And in the worst case scenario, we will be a local platform within India that will be promoting climate tech solutions. Currently, we are developing our MVP, and we plan to launch a pilot plant in next year and expand later year. And these are our achievements that we have achieved. Currently, we completed our proof of concept in the early stage of this year and currently developing the MVP. In the pilot stage, we plan to remove 180 tons of CO2 per year. So, starting from 2024, we plan to remove 1,000 tons of CO2, and by 2050, we plan to reach 1 billion tons of CO2 per year with all our solutions we are developing at Infinite Earth. This is our founding team. We are engineers and problem solvers trying to solve the biggest problem we as humanity need to solve. And we are looking to fundraising of $60,000 to scale up to pilot stage.
So we are into life Earth. We are asking a pre-seed investment of $60,000. Thank you. Carbon is an issue we all understand. How did you think of doing this? Because you're a mechanical engineer, right? You're not. Actually, we are one of the directly affected people because my entire village and my home is just 1 kilometer away from the sea. And due to sea level rise, we might lose our home into the sea soon. So we are starting to face this problem. We searched out to find solutions. And after 1 year of research, we came to this stage. How do you scale up? Because you're saying that you're going to be working on mangroves, right? That's where you make your carbon, right? Actually, we are developing a network of solutions. Yeah. So currently, this region is our home location. We want to expand there, and even within that region, we can generate, build a biomass of nearly 1 million tons of CO2 removal. And in sufficient locations around the world, we want to scale up our solutions where there is necessity for carbon dioxide removal. And as climate awareness is growing, there is need for carbon dioxide removal in the coming years. So how much investment is required to actually get to your product? Yes, sir. So since we are developing two main solutions, that is offshore solution as well as the onshore solution, these two solutions we need to develop our technologies. We completed project, we are in the prototyping stage and we want to go to pilot stage. For that we are requiring $60,000. So you need $60,000. For every ton of carbon dioxide which is removed from the environment, yes, sir. What is the investment required? For every ton, it is costing, as I mentioned, $180 per ton. That is the cost we are requiring to do that task. And that cost will be bought by the companies and all for them to reach their net zero goals. So you're saying you need $180 per ton of carbon dioxide, which is removed from the environment. Yes, sir. So, and your target is how much in terms of carbon dioxide removal in the next, in a year, right? In the third year of your operation, let's assume that, right? What is your target of removing carbon dioxide from the environment? What's your target? Okay, sir. As I mentioned, next year we want to launch a pilot plant of 180 tons of removal. Yeah. And by 2024, we want to scale up to 1,000 tons of removal. So we want to approach our marketplaces as well as direct customer purchases. Later, as they will be giving pre-purchase agreements, initial of $500,000. Then they will take offtakes from us. Continuously, they will be purchasing the carbon removal rate. So with them, we will be growing our venture. And also, in our go-to-market strategy, as we generate the revenue, we will be scaling up our systems. Because as we scale up, we will be generating more revenue and more impact from our carbon dioxide removal solutions. So what your target is basically corporates who want to buy the carbon credits. Yes, sir. Right? And how profitable is going to be in the end of say 5 to 7 years of your operation? Yes. So the main thing is, in order for it to be more profitable, it needs to scale more. So if you are scaling like millions of carbon removals, so the profitability will be more than compared to like 1,000 carbon removal sales. So that's why we need to scale up, sir. And also, as you can see here, this is a company called Stripe, Alphabet. All they collaborated to form an organization called Frontier, and they are spending $1 billion within this decade to spend on carbon removal. So we are going to give the money on large scales, and we need to scale up to that level. Currently, there is no scale to reach that level, and we are trying to grow to that level with our venture. What are the barriers of entry into for anyone else like you coming and doing this carbon removal? Yes, sir. Because it's going to be a big industry, I understand that. Right? Yes, but what is the differentiator or what's the kind of moats you built around your? For the nearshore CDR and also the onshore CDR, it is based on the location. Because the Godavari and Krishna River deltas are the fifth largest ecosystem. So those solutions are native. From then we will scale up to other regions where it is necessary. But our offshore CDR, it can be deployed offshore in suitable locations around the world. So it can be scaled up easily when we got the permits. So $60,000 will take you where? To complete the pilot stage and get our early revenue. So you will get revenue by 60,000, investing $60,000? No, sir. We will validate and we will complete the prototyping and go to the pilot stage. So what is the next stage of your investments you will require? How much will you require after the? So from then we want to scale up to, as I was shown here,
we need to scale up in those regions to scale up our operations for biochar production. So biochar will be giving us a standard revenue, and our offshore will be scaling up our revenue like a profitable way. So we need to scale up our locations to in the given region. So for that we need to raise in the order of like 5 to 10 CR for the seed round. No, seed round, I understand. Beyond the seed round, yes, when would you need the next round of investment? Right? Would be how much? How much are you looking for after that? 60,000. After the seed round, so Yes. after the seed round, we want to scale up to European Union, where there is a demand for climate tech solutions. I understand where you want to go, but I want to understand how much capital would be required after the seed round. Okay, sir. Let it be pre-seed or whatever you want to call it. Okay, right. But $60,000 is not going to last very long once you have done your proof of concept. So what's your next round? How much money will you raise after that? So for pre-seed around $60,000 round, we are looking to 5 to 10 CR, and for post-seed round, that's pre-series CA, for that we are looking in the order of 10 to 12 million, and post that we will be looking for series CA, that is in the order of 30 to 40 million, $40 million. So we will be scaling up based on the scaling up operations only. We will be generating that. Okay. Yeah. So this is a very noble thought that you want to save the planet and primarily being impacted because of global warming. But I have a question. India is not part of like Kyoto Protocol didn't get extended beyond 2012, and India was producing CERs, carbon emission reduction units prior to that. What units would they be? Because they are voluntary units, which are part of different trading schemes in Europe. I think Australia launched one, they rolled it back. Possibly US has some states which are launching some emission trading mechanism. Which jurisdiction does this come under? Is it voluntary units or they are like involuntary units which, corporates are looking to just offset, which are not priced much? So this, there are, as we have mentioned, there are 3 types of credits now. The cap and trade system that is maintained by the government bodies. The second one is carbon offsets, that is voluntary. And the third one, this is carbon removal. This is started to evolve because this is based on impact. And only few marketplaces and key players are doing that. It is in the starting stage. As you mentioned, this carbon offsets, 90% of the carbon offsets are not impactful. It was verified in a study. So mostly it is based on the verification partners like Climate Action Reserve and Vera. These platforms will be verifying the project developers. So they are voluntary units? Yes, sir. Yes, ma'am. But your cost of making 1 unit of carbon emission reduction which you do is $180. Yes, ma'am. I don't even think even the emission trading schemes will ever price carbon at that volume, that unit price of $180. It's really very high. So how do you think this is going to be sustainable in the long run? Because sustainability is the key, right? So you're looking at being sustainable. So how do you think this will work out? Because ma'am, more than carbon offsets, like avoiding emissions, they are actually removing emissions. And compared to our competitors, the Carpets is the industry leader, but it is having a price of $1,200 per ton. And it is the industry leader. And they are scaling up and they recently raised a valuation of $600 million of investment. So they have the highest price, but still they are scaling up because the solution is sustainable. And they are projecting that by 2050 it will scale up to $150. And by 2050 we will be in the order of $30 to $60. But still, I feel that's not a very sustainable price if you're looking at being able to be self-sustainable without investor funding, then it doesn't really make sense in the long run. So that's what I was heading towards. So Right now, how many competitors do you have? Currently, in the carbon removal space, there are 15 to 20 companies who are generating revenue based on this. For NTR, they selected 12 startups. And next year they're going to select the next round of 6 startups, and we want to apply for that. So that Can you show me the competition analysis? yes, sir, this one. This is regarding the futures of our competitors, sir. How we have unique selling point against our key competitors. And these are all the companies we are having in the carbon removal space. And we have Charm Industrial and Carpets. These are all companies that are actually removing carbon. And next level we have the carbon
direct air capture companies, capturing carbon from the direct air. That was the second round. And on the final round, we have carbon capture, utilization, and storage. So they use the carbon dioxide for other applications like enhanced oil recovery. They are applying for those technologies, but they are not carbon negative. We are working on carbon negative. We don't want carbon neutral, but we need carbon negative. That's what we are working on. Yes. Suppose if you think somebody gives you $60,000 today. So when you're going to raise your next round? In the Q3 of 2023, from that time, after generating the pre-budget agreement from India, from that stage to the Q2 of 2024, we planning to raise the next round. And finally, I want to conclude that we are not only focusing to generate revenue, we want to generate impact within our country. Thank you. How much? Everybody any commitments until now? Yes, sir. We spent up to 3 lakhs till now. No, not spent. Everybody any commitment from any investor until now? No, sir. This is the first time. Yes, Bootstrap. This is the first time are you pitching or you have? yes, sir. I have pitched, sir, but direct investor pitch is the first. So no one has yet given you a commitment. Actually, we didn't go for investor pitching till now, so this is the first. Okay. Okay, thank you. All the best. Thank you. Can we have a photograph for the participants? Sir, you will be selected. Okay. तभी तो हमने पूछा था आप मान लो सारे अगले Thank you, sir. Thank you, ma'am. फिक्स इन्वेस्टमेंट they have their own idea. But these guys don't have. The company is doing a little bit of first time, see what the problem is. They sort of Australia. Those jurisdictions, you know, the offsets also have more value and they have an IPO. So the mechanism in which factories are to Recently, a company came from Madhya Pradesh got listed in stock exchange. They are in this carbon trading. Yeah, that's I don't remember the SME वाले segment में most of the But ये पहले जब क्योटो प्रोटोकॉल का तब वैल्यू दिया We'll start with the next presentation, which is by Tech Action. Here. Thank you. A very warm good afternoon to everyone. Imagine a situation. You are riding your brand new EV, and just before reaching to Bennett University, 3 kilometers before, your EV has run out of fuel. And the next recharging station is 3 kilometers away. What are you going to do? Hello, my name is Tarun Adarsh. I'm Director of Tech at UK OTC Private Limited, and here I'm going to propose my proposal of lightweight thermoelectric generator as an on-site and on-demand power charging source for you. What I just mentioned was the tip of the iceberg. The problem is much deeper. Deeper is, when we are working on EVs, we have shifted from petroleum and we are shifting it to EVs, but the carbon credits, what we are doing, has not gone down. If you just put an additional battery, it won't help you out. It's a weight sensitive industry.
Not only that, the lithium ion extraction, that process is very carbon intensive. No infrastructure can cater this demand of on-site and on-demand supply. Other than that, it's just a toy car for edits. Moving further to my solution, we have to look what is actually the opportunity here. Do we have an opportunity? It's a $206 billion industry in India till 2030. Even if 1% of that is traceable, just 1%, it's a very good market. Talking about the opportunities, if the X amount of that particular solution which I'm going to propose, if I can tap it in a way, these three are the ways I can tap it in a business model. Subscription based, technology and out licensing, and B2B channel. Seems like curiosity is increasing of what is the actual solution for it. The customers will be definitely the EV users, the EV battery manufacturers, and EV suppliers, EVSE providers. The value proposition is, when you're riding this car, having this EV battery, the battery gets heated. What if we can reclaim that waste heat? Sounds very, very like something from fairy tale, but yes, there is a probability. A novel concept of hybrid energy source just from that overheating of the battery. This will not only reduce the carbon footprints, but will actually make sense that range anxiety will go away. We can have on-site, on-demand power source. Let me take you back to those old school days when we have that old engines. We already have seen those models when Stirling engines were used to be there. When they were heated, they used to drive the engine out. But why that was a failure? BMW tried that, but it was not a successful thing because they were used for driving the powertrain, which is not a good idea, not a physical solution. What if around the battery we jack it around with miniaturized heat engines and convert that power when the car is in riding state? Here is the proposed technology. Just have a look here. It's a visualization. Those miniaturized engines, if they are jacketed around the battery and will be placed in a battery pack just like that, as you can see towards the right, that is jacketed. One side that will be the hot area where the battery heating has taken place, and the other side will be having the coolant, which we already have in our cars. That can give you extra power, which can be stored in the traction battery. To make it more visualizing domain in a 3D car model, just have a look here. When we have this EV car battery, there the jacketing of this LTG system can give a great impact in storing some extra energy. How it can be used in on-site phenomenon? Here comes the thing. When I'm claiming that this low-grade heat can be converted into the electrical energy, this low-grade heat can be generated from hand warmers, which is already existing in the market with commercial names like hot hand or something in the cold countries. These are just solid materials. Just expose it to air, they will give you heat and can let this engine to work. Some technical details are here. I can share it whenever if you're interested to share with all those details. The competition, yes, we have competition in AD, EG systems, we have RP systems. The players are well known. They have very good distribution channels. They have market share, access, high accessibility. But what we have, that is the comparison what my proposed system and the other systems are. Obviously, the efficiency matters. Yes, the efficiency of this proposed system can be taken up till 40%. Well-researched papers are there which are suggesting such efficiencies. Raw material cost will be low. On-demand, on-site power supply is not there with the RPA system or ATEG systems. And definitely EV range extension, which I am seeing. Suppose that 3 kilometer distance, if that system is there in your car, you just get an instant source to get to the next charging station. As it is said, the teamwork does the dream work. Here's my team who is always supporting me in whatever I had planned, because at research times I'm really thinking sometimes crazy stuff, but yes, they are there to make my vision successful. And I'm always supported by my mentor, who is always an external support from me, Dr. Anajya Rai. She's a pilot and she has got awards from EIT and many other prestigious awards. I asked for this prototype development at 60 lakhs. The cost breakup of all the equipment and the realistic prices have been just in front of you. That's all. Our aim is to have a green economy where people can breathe the good and the right. Thank you so much. Thanks, Arun, but I think I'm out of it. I don't believe in EVs. I'm a great supporter of hydrogen. Hydrogen. Yes, I think the long-term
perspective, I think hydrogen is going to overtake EV. EV has just too many issues around it. One of the issues is you're addressing actually a very small issue around EV, right? Yes. And there are all kinds of technologies being talked about. Yes. How to increase the life of the battery, how to dispose of the battery, all kinds of issues around EVs. So many, yeah. Yeah. So I think I'm going to bet behind hydrogen. Sorry, I'm not. No issues there. Hi, Tarun. Hello. So, yes, is this the battery technology do you have any IPs in that, or you're just sort of taking the external heat which is generated from the battery and Yes. just with the IP on that? No, the model is design of miniaturized heat engines embedded in a unit. Okay. Around this, how it will be jacketed around the battery, where the hot overheating of this battery can be used and be converted to the electricity in the traction battery. And have you done like a proof of concept? It's in the yes, we have talked to the experts of Kola Electric. They have validated yes, it can be possible, and if you start working on it, like great. But we have discussed with the experts now. Okay. So ideally, when if we look at something from an investment standpoint, then we like to see our product as this novel. I do understand that is the concern. Like for developing that, I will be needing. And there would be a lot of R&D centers or labs which, if you could work with them on, yes, you could develop something. Yes, or even a professor whose lab you're working with, or it's sponsored by some of the big corporates as well. They do a lot of R&D, some collaboration on that front. We have a lot of confidence. We have commercial, financial investors like that. Yes, we have talked with them, and like Kola Electric, I have talked from the experts from Kola Electric, and now we are just working on the possibilities whatever could be there. But we also want that from our end, if we can develop a prototype with some support, like initial support, and can showcase it, like that can be a possibility. And not only the application is in EV, there are so many other user cases which can be having. It's an on-site on-demand supply, which is right now the heat problem is very much problematic in increasing the global temperature now. How can we tap that? Why only EVs? Why we restrict ourselves to the EVs? If this thing is working, we can wrap it around to anything which is generating overheat, like what has overheating issues. It could be ACs, it could be other things. So that can lead to a very good user case. But for initial developments, definitely, if we can get some initial support, that could be of a great use to our team. That yeah, I think this is a bit early for institutional investors like ourselves. So, the bet can be like, for example, in hydrogen. Even without like any prototype or anything, or even a strong knowledge partner, like a big corporate or. If we are talking about the big corporate partner now, had we been truly investing into R&D, because in big structures, big corporates, things take a lot of time to even like pass one override or R&D. They are very slow in that. That's how if you have like EV companies, all are working on similar model like either and all. But no innovation in how to reclaim the energy maximum utilize that. That's the main issue. For that, startups like us who are not from there and like who have some background of like all this R&D work and some technical team, they can only fulfill this demand. That's the only thing I can say, man. Yeah. Sorry, I don't invest in exchange. Okay, sure. But I have a suggestion for you. You Sure. should participate in government sponsored schemes. Yeah, that's what I we are startup in the schemes. Sure, you should be part of some AST supported incubator, Yeah. which you can live through grants. Yes. Because that will be the best for you. Instead of approaching Sure. investors, you should go there. Definitely. Yeah. Thank you. Do you know Logline? Yeah. Logline. They're in the weddings. No, I'm not covered. There is Series B, they are backed by Singapore. Okay. Through search. So you can check it out. Somewhere they can support you to complete your R&D class. They are also support the investment opportunity. And we are in collaboration with them. We are also participating in it. Because like others, like we don't have the technical knowledge, but we are utilizing their expertise. So their founders are in our vectors. Sure, that would be a great help. That would be really. Have you applied for startup India recommendation?
Yes, so I would like to tell you, this is my third project. The first project is a I'm preventive. talking about this project. No, for this one, like we have just initiated into this prototype networking stage, and it is getting. You should apply. Ah. You should apply and go for those schemes. Sure. So this is your third project or your third venture? No, sir, project. My project is this one. It is the aim is cleaner technology and preventive healthcare of your heart and lungs. The first project is against coronavirus. We have this prototype ready, which we are going to keep it in the market in 10 to 15 days, most probably. And the other project is Halcha system, which is tracking your heart and lung parameters just by voice, which has been recently funded by IIT Delhi. So this is one of because we are an R&D team, so definitely the project pipeline will carry on, and all these are well discussed with experts. But just one thing I would say, hydrogen cell you mentioned. There are so many issues with hydrogen as well. Like if that would be a thing you can just take out, because a lot of work has been saying this itself has so much carbon contribution to the environment. That's a bit like you can think of something that way. Yeah, I think one needs to follow what the auto industry has called. I can understand. Yeah. So the first wave has been of EV. Yeah. The Japanese auto industry is banking on hydrogen technology, right? You've not even heard of Toyota or Nissan coming with EVs, right? Because the entire Japanese auto industry is working towards creating hydrogen as a fuel rather than as EV or battery as something that we drive out of in the future, right? So companies working. I think all these will have issues. So like you have an R&D setup. I appreciate people like you who have an R&D setup and doing various, not only this, but a couple of things which I mentioned. So ideally you should be an R&D organization, right? And there are different kind of investors who put money behind it. Exactly. Right? So we are venture capitalists. We put money behind a venture, right? Not behind an R&D, right? So you can call yourself an R&D lab, right? And then you will have grants and even developmental foreign institutions backing you. And they write big checks. So you need to actually think of that, how do you structure yourself? If you structure yourself as an R&D powerhouse, which is very badly needed in India, you may have big time, big corporate venture funds, backing you, rather than coming to angel investors or early stage investors. But I would just add this one. It could also turn out to be a very good bet if VCs also think of some time, like putting a small one, because not too much, just a little one, just to showcase. Who knows, it can be a big thing and can have a good market. That's something I can say. A little bit like, which is nothing much in comparison to the other companies, other events, a little bit can be a very big change. But the first thing is that VCs don't bet, right? I understand they have a strategy. I have a certain strategy, so we are not analysts, right? It's not that we are playing right? So we back what we think is going to give us good returns, not only to us, right, but to all the stakeholders at large. Right? So my recommendation to you would be a very strong recommendation is that go back and think that how do you want to structure it. You want to go and get grants or capital for every idea, or you want to get an overall capital for your R&D structure. Right? So a lot of corporates will give you money to do specific researches on what their issues are. Right? So I think you should grow as a R&D institution rather than worry about each and every. So commercialization of your ideas to someone else. Yes. Well, our mission is preventive healthcare of heart and lungs along with green technology. Whatever you have. I have a solution for you. First of all, you need to decide ki you need to run projects or you need to run business. Yes, that's what I Yes. You know, right now you're saying I have 3 projects. Yes. So you need to decide ki you're asking funding for projects or ventures, because you know we have come here for ventures, not for projects. Sure. I think all of us. Yes, I can understand. Definitely, sir, we'll consider this as a very good feedback. We can contact the government agencies for such thing. But I said that how you want to function as like a project-based something. So, sir, the first project which is there, unless it will be a big name, like in a D2C market, we won't move to any other things. That's how we have built up. And since we will be coming soon in the market within 10 days or something, then it's just in the pipeline is there. So it's just everything like who has vision, who has trust in our vision,
they can So you are going to launch your POC within 10 days. No, not this. That's the first product I mentioned, sir. Yes. So I thought you were going to launch this. No. If फिर मैं पैसा लगा देता so that's why I fully understand. We'll talk about it. Anyways. जो रियल मनी गेमिंग ऑपरेटर्स है ना पूरे इंडिया के गवर्नमेंट के साथ ही बेट्स ले रहे हैं. Sure. Okay. Thank you. All right. Like I do guys, right? But we need to structure ourselves. So we have been joined by our fourth judge for the event, which is Mr. Manas Pal. Mr. Manas Pal, who's a co-founder of Pedal Start, assured that with 0 to 1, they aim to provide all entrepreneurs an equal chance to learn and grow, regardless of their background or expertise. At Pedal Start, we are building a startup founders community for passionate founders to enable them with the startup ecosystem by connecting with experienced ex-entrepreneurs, domain experts, successful startup founders, and investors who support them in their startup journey. Requesting you all to please speak in the mics because the audio is not going to be आप प्लीज स्टॉप करें कि लाइव स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है? अच्छा श्योर प्लीज ऐसा नहीं करें. उधर पीछे बोल दो वहाँ पर ये सारे करके Bennett is channel. The next team that we have is Idea Research and Development Private Limited. Thank you so much. My name is Maiden and I am co-founder and CEO of Idea Research and Development Private Limited. It's a startup company which was established in August 2021. We are the only company in India who is solely working on designing and development of nano. We are the only company who has successfully designed and developed India's first made in India nano drone, which is recently procured by Indian Armed Forces. So as a startup, what we are doing, we are basically a R&D based company who is working on UAVs, that stand for unmanned aerial vehicles or drones, and we are integrating artificial intelligence, or I can say futuristic technology with the UAVs. Since we are only dealing in military surveillance in the industry, drones के जो applications हैं वो बहुत जगह पे हैं. Logistics से लेके आप कहीं भी देखेंगे, यूनियन फार्मिंग में, फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में, हर जगह drones के application हैं. लेकिन हम लोग सिर्फ मिलिट्री सर्वेलेंस को लेके ज़्यादा काम कर रहे हैं. और ड्रोन नो डाउट आने वाले टाइम में फ्यूचर में इवन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके भी हर स्पीच में आप ड्रोन का नाम जरूर सुनेंगे. So it's now a very big market for India. So what our vision? Our vision is to become India's leading R&D based company in military surveillance industry. Sir and ma'am, इंडिया में हम लोग पिछले हमारा जो स्टार्टअप है 1.5 साल से काम कर रहे हैं. एक बहुत ही चीज है जो बहुत परेशान करती है. Yes. So अभी सबसे ज्यादा कॉमन ट्रेंड ये है कि इंडिया में पार्ट्स लाके असेंबल करके फिर मिलिट्री में सप्लाई होता है या बाकी जगह. So what we are doing, we are trying to develop all possible technology in house. जितनी भी ज्यादा पॉसिबल है उनको इन हाउस डेवलप करें. सो यही हमारा विजन है और विजन के चलते हम, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं मिलिट्री सर्वेलेंस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, तो अभी कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे दोनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले. अगर मुझे हार्डवेयर ड्रोन लेना है
तो मैं किसी दूसरी कंपनी के पास जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे सॉफ्टवेयर लेना है तो मुझे किसी दूसरी कंपनी के साथ जाना पड़ेगा। सो मेरी डिपेंडेंसी यूजर्स की बहुत है ना, और इससे प्रोजेक्ट भी डिले होता है नो डाउट, और जो कस्टमर को चाहिए वो नहीं मिल पाता। सो आइडिया इज द वन प्लेटफॉर्म व्हिच इज ऑफरिंग बोथ इन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। सो अभी जो एक साल की जर्नी रही है काफी अच्छी रही है हमारी। इन अगस्त हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। इन सितंबर वी गॉट द प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडियन आर्मी। लाइक सिर्फ एक महीने के अंदर वी पेनिट्रेटेड द मोस्ट डिफिकल्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, दैट इज डिफेंस इंडस्ट्री। सो एक महीने के अंदर हमें इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट मिला। उसके बाद ये प्रोजेक्ट मिला कि कॉन्ट्रैक्ट मिला? सर प्रोजेक्ट मिला सर। वी वर इन्वॉल्वड एज अ थर्ड पार्टी। हम लोग क्योंकि एक साल था जैम पे भी नहीं थे, सो एज एन इन्वेस्टर। ये जो प्रोजेक्ट है ये सर पिछले 11 साल से पेंडिंग था, हम लोगों ने सिर्फ इसको 3 महीने में कंप्लीट किया। Sorry to interrupt. So are you going to get money for this project? Yes, we got the money. I'm coming. I will cover all the points. So in April we got selected as a winner in UP start. There is an event on at Sharda University, जो कि DRDO और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हम लोग विनर थे। We also got selected in IIT Delhi incubation program. उसके बाद अभी इंडियन नेवी सर आईडेक्स चैलेंज कराती है, जिसमें इंडिया की टोटल 60 कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। इवन अदानी, टाटा, सारे डिफेंस के प्लेयर्स वहां पे थे। We were in the top 3 in that नैनो ड्रोन कैटेगरी। सो हम लोग ऑल इंडिया में टॉप 3 पोजीशन पे थे। और अभी सर इंडियन आर्मी ने रिसेंटली हिमालयन कंपटीशन करवाया है, जिसमें उन्होंने ड्रोन्स की कैटेगरी के हिसाब से यूजर को बुलाया, स्टार्टअप्स को बुलाया था कि यूजर की ये रिक्वायरमेंट है, जो भी कंपनी इस कैटेगरी में आ रही है वो वहां पे डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। तो नैनो ड्रोन कैटेगरी जो कि रूम इंटरवेंशन वगैरह के लिए वो देख रहे थे, उसमें आइडिया सिर्फ इंडिया की पहली कंपनी थी और अकेली कंपनी थी जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए से क्वालिफाई किया था। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने पहले ही बता दिया कि यूजर को सर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे चीजें नहीं मिल रही है, डिपेंडेबिलिटी है कहीं ना कहीं, और इंडिजिनस सॉल्यूशन नहीं है, तो कॉस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा, बहुत महंगे पड़ते हैं उनको सॉल्यूशन। और वही हम लोग कर रहे हैं कि जितनी चीजें पॉसिबल है इंडिया में उनको इंडिया में बनाने का काम कर रहे हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन आर&डी कि आर&डी करके हम जितनी भी चीजों को इंडिजिनाइज करें उनको इंडिया में ही बनाएं, क्योंकि बहुत हो गया वो चाइना के ड्रोन यूज करते करते। अब टाइम आ गया इंडिया का खुद का ड्रोन होना चाहिए, ड्रोन इकोसिस्टम होना चाहिए। सो आवर प्रोडक्ट इनोवेशन, यू कैन सी वी हैव 2 drones and 1 flight controller. One is Root Mark 1, यही सर है जिसकी वजह से आज आइडिया को काफी फेम मिला है। Recently this bird was inducted in Indian Armed Forces. पारुष जो है ये सर पेलोड ड्रॉपिंग ड्रोन है, और इसका भी ये यूजर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने बनाया था। सो यू कैन सी द ग्रेनेड इज माउंटेड ऑन दिस ड्रोन। सो अभी वी आर टेस्टिंग विद ऑल दी पेलोड्स जो भी करेंटली अवेलेबल हैं एज पर दी आर्म्ड फोर्सेस रिक्वायरमेंट। एंड दिस इज मारूत मार्क 1 ड्रोन के नाम सर जो भी कंट्रोलर्स हैं वो बेसिकली हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अभी तक इंडिया में कोई कंट्रोलर ही नहीं बना है। सो वी हैव सक्सेसफुली डिजाइन एंड डेवलप्ड आवर फर्स्ट मेड इन इंडिया कंट्रोलर मारूत मार्क 1, जिसका हमने इसका पेटेंट भी फाइल किया है। करेंटली प्रोटोटाइप पूरा हो चुका है, उसको और फिनिश करने पे हम लोग काम कर रहे हैं। सो दूध मार्क 1 के बारे में अगर मैं बताऊं मैम, ये नैनो साइज कैटेगरी का ड्रोन है। यू कैन ब्रिंग दैट। अभी ये इस नैनो साइज में 30 मिनट का टाइम देने वाला इंडिया का और वर्ल्ड का पहला ड्रोन है। अभी इसका जो कंपटीशन है वो सीधा यूएस का ब्लैक हॉर्नेट है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में यूज होता है, एंड इट कॉस्ट अस 1.5 CR and this is idea nano drone. This cost only 2 to 3 lakhs rupees only. So जो मार्केट है ड्रोन का वो अभी तक सिर्फ यूएस की कंपनीज ही हैंडल कर रही है। अभी हमने ये इंडियन सॉल्यूशन दिया है जो कि काफी जगह इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। एंड रिसेंटली वी आल्सो शोकेस दिस इनोवेशन इन इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन डेव एक्सपो, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एग्जीबिशन होता है। तो वहां पे हमें इंडियन मैन्युफैक्चर, इंडियन जो वेंडर्स थे, इंडियन कस्टमर के साथ साथ जो और भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला, क्योंकि नैनो ड्रोन कैटेगरी में यूएस के बाद ज्यादा ऑप्शंस हैं नहीं उनको, और हमारा जो प्राइस फैक्टर है वो इतना अच्छा है कि वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। पारुष के बारे में ये पेलोड ड्रॉपिंग ड्रोन है जो कि 5 किलोमीटर तक कोई भी पेलोड ड्रॉप कर सकता है, अप टू 400 ग्राम्स। रिसेंटली वी आर टेस्टिंग इट विद आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं टू मेक इट मोर मारूत मार्क 1। इट्स आवर फर्स्ट prototype of our one controller. We are also, as I mentioned in earlier, that we are also working on software part. So currently our drone can detect 80 objects. So अगर अभी we are training it as per user requirements. So currently we are training it as for
detection of tanks, weapons and all as per user requirement. Our business model is simple. V2 हमारा कस्टमर मॉडल है, उसके लिए पूरा हमने समझा रखा है कि कैसे हमारा हम जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग वी आर डूइंग एंड ऑल. रिसेंटली आपका जो सवाल था सर, ये इनोवेशन तो कर लिया, एक थॉट था कि कुछ बनाना है इंडिया में, क्योंकि जब भी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते थे तो वो 7-8 घंटे चल रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था जो अंदर जाके अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके. तो सिस्टम को हमने पहले बनाया. बनाने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आप ऐसा स्टार्टअप बना रहे हो, वो वायबल कितना है, उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं. तो वो रिक्वायरमेंट का ये सबूत है कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वी गॉट द ऑर्डर फ्रॉम इंडियन आर्मी itself. तो ऑलरेडी काफी रिक्वेस्ट प्रोसेस ऑलरेडी जा चुका है, ट्रायल्स हैव बीन डन एंड वी आर गेटिंग वेरी होम फीडबैक फ्रॉम द इंडियन आर्मी फोर्सेस फॉर द इंडक्शन. सो करेंटली अभी 4 से 5 करोड़ का ऑर्डर आया है. सो इसी ड्रोन्स के ऑर्डर को करने के लिए वी आर आल्सो लुकिंग फंडिंग अपॉर्चुनिटीज. लेटर ऑफ इंटेंट, सो जितनी भी आर्म फोर्सेस है उसमें ऑलरेडी दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन आवर नैनो ड्रोन. ये उसी के हैं. Our team, so sir, basically core team में अभी 7 members हैं, and advisors we are also having Brigadier V.S. Rawat sir and Ganesh Shah. He is guiding us during our journey. Collaborative partners, Precision Advanced System, there is a company in Aligarh जिससे हमारे MOU signed हुआ है. They are basically manufacturing partner and marketing partner for IDEA. IIT Delhi is also or urban who. We are done with the presentation. Yes. You can ask your question. Yes, so this is the last slide. This is the बचपन से एक ड्रीम था कि आर्मी के लिए सेवा करनी है, लेकिन क्या करता, तो फिजिकली कुछ चैलेंजेस थे, नहीं कर पाया. तो फिर एक ही चीज आई दिमाग में, तो ना स्किल्स का यूज करके किया जाए. तो स्किल्स का यूज करके हम लोग देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं. सो बस वो चीज जो वहां पे जाके नहीं कर पाए, स्किल्स की तरफ से कर रहे हैं. तो रिसेंटली वी हैव ट्रायल्स विद इंडियन आर्मी एंड यू कैन सी द नैनो ड्रोन. सो रूम इंटरवेंशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इंडिया हैज इज दूध मापन. आप इंडियन आर्मी में नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाएंगे, अगर वहां पे नैनो ड्रोन का जिक्र होगा तो वो आइडिया का नैनो ड्रोन ही होगा. सो ये शोकेस जहां पे हमने किए हैं, बेसिकली वी आल्सो शोकेस इन डेफ एक्सपो. सो वी गॉट feedback from neighboring countries also, like Rwanda, Morocco, Sri Lanka. We got the very warm feedback from there. So currently we are at NIET, वहीं पे हम लोग incubated हैं, और these are company, और मोटिव हमारा सिर्फ एक ही है कि बहुत हो गया बाहर के ड्रोन्स को यूज करना. Now it's correct time to let's make India self-reliant in drone industry. So that's all from my side. Thank you so much. Where are you incubated? Is that somewhere? Sir, NIET Greater Noida. It's nearby Bali Chowk, sir. Yes sir. हम लोग वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की थी 2018 में, उसके बाद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस किया सर. Then in 2020. What is the contract you have got from the Indian Army for nano drone? Sir, अभी currently we got 5 pieces for one particular army की requirement के लिए. But recently we have conducted trials with Northern Command. तो Northern Command के साथ NCNC trials हो चुके हैं. They are meeting report. तो उस हिसाब से दिल्ली एलाइन कितने पीसेस है स्टार्टिंग में उनको चाहिए सर. How much funding are you looking at? Sir, we are looking up to like we are waiting for keys. अभी जैसे सर सबसे बड़ा स्टार्टअप में सर जो चैलेंज आता है कि सर अभी जैसे किसी यूनिट ने बोल दिया कि हमें 10 पीस चाहिए, लेकिन हमारे पास वो फंड नहीं है 10 पीस अरेंज करने का. सो वी आर लुकिंग कि उस चीज में अगर कोई हेल्प हो पाए तो सर इट विल डिपेंड ऑन, वी कैन डिस्कस लेटर ऑफ द व्हाट विल बी द वैल्यूएशन एंड ओके. वैल्यूएशन ये बहुत दूर की बात है. यस सर. अभी आपका मार्केट अगर 5-10 का अभी ट्रायल पे लेते हैं लोग, तो मार्केट कितना बड़ा है, कितना डिमांड कितनी हो सकती है? सर अभी इंडियन आर्मी की जो आईडेक्स का चैलेंज है उसमें सिर्फ 150 ड्रोन्स का निकाला है, सिर्फ नैनो ड्रोन्स का, और ये सिर्फ इंडियन नेवी की है, ऐसी आर्मी की, ऐसी एयरफोर्स की है. तो 150 450 500 ड्रोन्स इंडिया, ये पहली रिक्वायरमेंट है. इसके बाद फिर इनके बाद फिर जो 9-7 आर्म फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनमें भी रिक्वायरमेंट होगी. इसके साथ ये जो प्रोडक्ट है सर, इसका इंडिया में तो मार्केट है, ग्लोबली बहुत मार्केट है ना, क्योंकि ग्लोबली जब हमने उनको दिखाया कि इस प्राइस सेक्टर में भी ऐसी चीज दी जा सकती है, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया. सो अभी हम यही प्रोसेस है कि इंडियन में जब हम इसको बेच लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलेगा, देन वी कैन गो फॉर. ये आर्मी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको और आर्मी को बेचने नहीं देंगे सर. आज के टाइम पे आप कह रहे हैं कि आप ग्लोबली जाएंगे, मोरक्को जाएंगे, श्रीलंका आर्मी खरीदेगी. जब आप इंडियन आर्मी को बेचोगे ना, तो आप जो साइन करोगे उनसे, वो तो उनकी बिना परमिशन के आप किसी को बेच नहीं पाओगे. सर आज के टाइम में थोड़ा सा ट्रेंड बदला है. जैसे अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है बीकानेर में सर,
बीकानेर में एक्सरसाइज हो रही है जो कि होनी है 6 तारीख से 11 तारीख तक. And Indian Army invited us to showcase our innovation to Australian Armed Forces because आज के टाइम में सर मिलिट्री में सीधा सा है, हमें सपोर्ट देना है, हमें फंडिंग देनी है, कैसे देंगे, डिफेंस इक्विपमेंट को सप्लाई कर देंगे. सो जैसे श्रीलंका वगैरह हो गई, मैं तो आपको 10 दिनों दे दूंगा, नैनो ड्रोन, वो टोकन पे कॉमन है. तो ये चीज सर जो बहुत कॉमन हो गई है. सो वो इंडियन आर्मी हमें खुद ही फोर्स कर रहा है कि नहीं ये टाइम आ गया है कि कब तक हम खरीदते रहे, अब बेचेंगे भी. तो दे आर पुशिंग कि आप इसको करो. इवन जो एसआईडीएम सोसाइटी ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, दे आर टेकिंग इट कि जो इंडियन डिफेंस की कंपनीज है उनको एक्सपोर्ट करने का मौका मिले सर. तो नाउ द सिचुएशन इज लाइक चेंजिंग सर. दे आर लाइक creating opportunities for export also. I like your product. I like the only thing which goes against my thesis that will I invest behind you or not is that you are dependent on one buyer, which is the Indian Army, and it's the toughest buyer I have known. सर अभी जैसे इंडियन आर्मी एक यूजर केस हो सकता है, लेकिन सर इसका जो यही हमने इस ड्रोन को बनाने के बाद हमने यही पॉइंट सबका क्लियर किया है कि इंडियन आर्मी के लिए हमने बनाया था, लेकिन ये हर किसी चीज में यूज हो सकता है. सपोज एनडीआरएफ ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस करने हैं सर, बिल्डिंग कहीं भी गिरी हुई है, बिल्डिंग के अंदर. I understand all that. Everywhere which you are talking about, government is your customer. Yes sir. Right? Yes, if you come out with something that how it can be used in other than government, yes, departments, can it be used by corporates and logistics? Can it be used by weather forecast? Can it be used in agri-tech to forecast Yes, certain things? Or can it be used to disperse fertilizers around the? I'm just looking at Yes. alternate, Yes. other than government, defense, intelligence agencies. Is there a market for it? Yes sir. Because what happens is I've invested in some government companies, right? They are very hot at one go, right? And then some innovation happens, the whole battle scene, the war scene changes, right? Yes. And the order stop coming. Then they land upon. Yes. So the dependence on the Indian Army is not the best thing. Either you are a very diversified manufacturer of armaments and drones. Yes sir. You are in nano drones, you are in all kinds of spaces of drones. Then one can understand. Yes, with 350, 500 drones annual requirement or not even annual one-time requirement, I don't know what's the life of a drone. How many times does will it get shot down or? सर रिसेंटली जो ड्रोन्स की डिप्लॉयमेंट हो रही है वो सर ऐसी हो रही है कि पिछले अगर मैं बात करूं सिर्फ 1 साल की, सर 28,000 करोड़ से ज्यादा आज के ड्रोन का फैड है ना, everyone thinks that और ड्रोन पे हो. और अब तो सर क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया है डीजीआई के सारे सिस्टम. सो गवर्नमेंट का ये है कि इंडिया से ही खरीदो. गवर्नमेंट जितना ज्यादा कर रहे हो उतने ज्यादा मैं भाग रहा हूँ. एंड सर आप जितनी गवर्नमेंट बोलोगे उतने दूर चले जाएंगे. नहीं यस. एंड दूसरी चीज कि सर जैसे आपने बोला कोई और अल्टरनेटिव यूजर है, सो करीब इसका सर जो साइज जो है अवार्ड्स बहुत मिलेंगे. यस कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे. सर इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. अगेन सर प्राइवेट सेक्टर में भी इसका मार्केट है. रिसेंटली वी आर वर्किंग दैट देयर इज अ कंपनी वो समझाओ. आप जब समझ लोगे ना कि प्राइवेट सेक्टर में क्या मार्केट है इसका, 400-500 ड्रोन की जगह आप 40-50 लाख ड्रोन एनुअली ड्रोन बेच पाओगे जी. जब इंटरेस्ट आएगा इन्वेस्टर का. बिल्कुल सर. चलो आपके इससे लिए पहले नहीं आएगा. आपके लिए मेरे तरफ से एक ऑफर है. आपने कहा कि कभी आपके पास ऑर्डर आ जाता है 10 के लिए कि आपके पास पैसा नहीं होता है, चलो हम फाइनेंस कर देंगे. बताओ. ओके. सो सर जो फंडिंग है क्योंकि अभी आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, you haven't decided how much you want to dilute, how much you want to raise. सर हमने एवेल्युएशन किया है. अभी जो रिसेंटली जो एवेल्युएशन था वो 10 करोड़ का किया था. अच्छा. रिसेंटली एवेल्युएशन. तो इफ वी आर लुकिंग फॉर फंडिंग तो डेप्थ बेसिस पे वी कैन सी फॉर इक्विटी वैल्यूएशन पे वी कैन सी. इक्विटी एक काम करते हैं, इन्वेस्ट दिस कंपनी मॉडल में कर लेते हैं. ना मेरा कोई रिस्क रहेगा ना आपका कोई रिस्क रहेगा. ऐसा भी कर सकते हैं. बिल्कुल. अब बात रही गवर्नमेंट की, तो हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं हम तो गवर्नमेंट के साथ रोज ही फाइट करते हैं. आपके लिए भी कर लेंगे. बिल्कुल सर. दिल्ली कर लेंगे सर. सो व्हाट्स योर ऑफर सर? तो आप तो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा ना. जी. इस टाइम पे आप मान लो कि आपको उस टाइम पे 25 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, उस हिसाब से हम देंगे ना. यस. सो व्हाट वी कैन डू, आप फिर वापस करोगे, फिर आपको जब ऑर्डर आएगा आप पैसा लोगे, फिर हम देंगे, आप लेंगे. तो सर वो चलता रहेगा ना. हाँ सर. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू कट बेसिस कि जितना भी ऑर्डर आएगा 10% 20% ऑन परचेज होगा. कैमरा में बाद में डिसाइड करेंगे. बिल्कुल. लेकिन ये ऑफर हम दे सकते हैं हमारी तरफ से. जी सर. क्योंकि आपने कहा कि पैसा नहीं रहता है जी. जो ऑर्डर आ जाता है जब मतलब
10 का ऑर्डर आ जाते हैं, 5 का ऑर्डर आ जाते जी हैं, सर। तो हम देख लेंगे वो चीज़। Yes. एंड सर मेरी तरफ से जब इनका डेट लेके आप थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, जब ये आएंगे हमारे पास तो आप इन्वेस्ट करें। जी सर। एंड सर इसका जो आपने बोला बस लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि सर हर एक सिस्टम को बनाने के पीछे एक आइडियोलॉजी रहती है, तो उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंस थी, लेकिन सर अभी जैसे जब जितना जितना दिखा रहे हैं तो उसके यूजर केस नए नए निकल के आ रहे हैं। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सेंको ज्वेलरी, उनका बहुत बड़ा ज्वेलरी का है बिजनेस, वो वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए। कोलकाता। यस I am wearing Senko jewelry. यस। सो सर उनके वेयर हाउस के लिए ऑलरेडी वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट विद सेंको ज्वेलरी। उनके लिए बस हमें एंटी कोलिजन इसमें डालना है, उनकी एकर्स में फैले होते हैं, तो उनके लिए हमें सर एक मॉडिफिकेशंस करनी है, इट कैन बी यूज्ड फॉर दैट। तो सेनको में भी हम हेल्प कर सकते हैं। यस सर, कोलकाता से ही है सेनको के काम। बिल्कुल का पैसा और सहायता ले लीजिए, जब 6 साल 2-3 साल में जब भी इनको एग्जिट क्या हमें निकलना है तो निकलेंगे रोमा। यस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच मैम। You can go for a photograph over there, or your teammates can join. You can go stand there. अच्छा ओके पीछे और रहने वाले कहाँ के? सिर्फ है नहीं यूपी पर है, यूपी में बैठे हम लोग झांसी। यस अभी क्या कॉस्ट आता है एक बनाने का? पूरी सेट आउट कर देते हैं और बेचते हो कितने? इसके लिए वही नहीं भाई, बाहर हमने तो आपके ऑर्डर 10 के लिए 100 दिया हमने, सही हो जाएगा। बाकी जब लाखों में होगा इन लोगों को इन्वेस्ट कर लेंगे हैं। नहीं थोड़ा सा अगर आपने ऑर्डर देते हैं तो मिलेगा आज नहीं तो सब। एक सलमान So this team is Scrapbook and Hi, good evening. Myself Shrikant and I am the founder of Scrapbook Services Private Limited. तो जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं कॉलेज में था, आई एम इन 3rd ईयर, तो हम बनी है हमने दुकान को करा, तो मम्मी ने बोला बाहर है जस्ट को बेच के आ। तो मैं बेचने गया तो लालच आया घर में, वजन करके गया था कि 10 kg वेट है इसका। जब मैं बेचने गया तो मुझे एक कबाड़ी वाले ने रेट दिया 12 रुपए किलो। और लालच आया था, ट्राई करते हैं कहीं और क्या ज्यादा रेट मिल जाए, हम सब ऐसे ही करते हैं। दिल्ली वाले को नहीं बेचते, एक्टिव पे रखते हैं, दुकान वाले के पास जाते हैं बेचने। वैसे ही किया, सेकंड वाले के पास गया, उसने रेट दिया 14 रुपए किलो। मैं खुश हो गया, मैंने उसको दिया तो उसने वेट निकाला 10 kg का 8 kg, मतलब उसने वेट में घपला कर दिया। फर्स्ट ने रेट कम दिया, दूसरे ने वेट में घपला कर दिया। देन मैं कॉलेज वापस आया, देन टीम लीड करी एंड देन एक स्टार्टअप किया स्क्रैपबुक के नाम से। एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसमें हम घर में अपने बंदे भेजेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, जिसके अंदर डिजिटल वेट मशीन होगी और हम स्क्रैप खरीदते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं, देन फैक्ट्री को सेल आउट करते हैं। तो अपने बारे में बताता हूँ, मेरे कुछ 21 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करे मैंने 1 साल के अंदर, रिकॉर्ड है ट्राई सिटी के अंदर एंड फ्रॉम चंडीगढ़। सॉरी टू इंटरप्ट, कितने सारे पब्लिश हो चुके हैं? पब्लिश सर अभी 3 साल नहीं हुए हैं इन इंडिया। क्यों आप एक्सपेडिट कर सकते हैं? अराउंड 10। तो आप स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। ये अबाउट अस जिसमें आपको बताया हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, हम फ्री डोर स्टेप पिकअप करते हैं स्क्रैप की आपके घर से, जिसमें हमारे वेरीफाइड पिकर आपके डोर स्टेप पे पहुंचता है वेट मशीन लेके, आपको स्क्रैप पे एक्सचेंज में अमाउंट भी देता है और कुछ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हम प्रमोट करते हैं जस्ट कि आपने एनवायरनमेंट के लिए यूज किया है। कस्टमर ने हमें न्यूज़पेपर सेल आउट किया, ये पेंसिल्स न्यूज़पेपर से बनी है। इससे यूएसपी क्या है, इसके लास्ट में सीड्स हैं, सबके लास्ट में लिखा हुआ है अजवाइन टमाटो कुछ भी। तो जब ये पेंसिल यूज हो जाएगी उसको आप जस्ट जमीन में डाल दीजिए, वहां प्लांट हो जाएगा।
तो इससे कस्टमर्स को लगता है कि हमने शायद इन्वायरमेंट के लिए कुछ किया है। एंड हम एवरी मंथ जो हमें रेगुलरली ऑर्डर्स करता है तो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि यू हैव डन इतने कलेक्शन कर चुके हैं आप वेस्ट की, आपने इतना एनवायरनमेंट को सेव किया है। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, लैक ऑफ सर्विस थी। हम घर के बाहर खड़े कबाड़ी वाले को वेट मारते थे, कॉल करते थे कि आ जाओ ले जाओ, वो बोलता शाम को आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, और वो तराजू लेके आ जाता था, इसमें वो नीचे चुंबक लगा करता था पहले। फिर अब हमने सॉल्यूशन निकाला है, सर्कुलर इकोनॉमी है एंड प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, डिजिटल अप्रोच है। ये हमें कुछ फीचर किया था। अभी रिसेंटली हमने टाई अप किया है हरियाणा पुलिस के साथ, जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट इलीगल शराब का व्यक्ति है, वो पुलिस स्टेशन के अंदर स्टोर होती है। अभी तक क्या होता था, वो सारी बॉटल्स को जेसीबी के थ्रू क्रश करके जमीन में डाल देते थे ताकि कोई उसको यूज ना कर सके। तो रिसेंटली मैंने अम्बाला में ऐसा किया है कि हमने सारी बॉटल को एम्प्टी की है, एक एक बॉटल को, और उसकी जो अमाउंट से उसको रिसाइकिल करने के बाद जो अमाउंट मिलती है उससे 50,000 रुपीज मैंने पुलिस स्टेशन को दिया है, जिससे उन्होंने अपनी रेजोल्यूशन कर दिया है। अभी तक उनको कुछ नहीं मिलता था, बल्कि जेसीबी वगैरह सबका पे करना पड़ता था। रिसेंटली वी हैव डन दिस। ये सर्विस है, कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड देन हमारी टीम कंफर्म करती है बैकएंड से एंड पिकअप पहुंच जाती है उनके पास सामान पिकअप करने के लिए। दिस इज फ्लो है, ये इनके पास सामान है, कस्टमर ने फोटो क्लिक करी, हमने वेरीफाई किया, गाड़ी पहुंच गई, पैसे मिल गए। ये बिजनेस मॉडल है। हम 5 बिजनेस मॉडल पे अभी रिसेंटली वर्क कर रहे हैं। कमीशन फ्रॉम मर्चेंट्स, मेरे पास 103 पिकर्स है रिसेंटली कबाड़ी वाला, जिसको हमने ट्रेन किया है, जो साइकिल पे गली गली जाते थे, हमने उनका बिजनेस नहीं खराब किया, उनको ट्रेन किया, उनको सेक्टर मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को उनको फॉर्मली सेक्टर में ट्राई करने की कोशिश करी है। अब वो हमारे पे काम करते हैं और पिकअप करते हैं हमारा वेस्ट। जैसा बताऊंगा अभी लास्ट हमें पता लगा था, पहले वो 10 से 20 हजार रुपए कमाते थे, अब उनकी मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर है। ना तो धूप में घूमना पड़ता है, जस्ट एक जगह बैठते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑर्डर पहुंचता है एंड देन वो पिकअप कर जाते हैं। अब मार्केट प्राइस देख सकते हो, अभी ट्राई सिटी में मेरा वर्किंग है, तो 8954 मिलियन टन हमारा डेली बेस जनरेट होता है ट्राई सिटी से। अगर मैं 1 रुपीज केजी भी एवरेज मान के चलूं तो इट्स अ गुड अमाउंट। ये कॉम्पिटिटर्स हैं, ये हमारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं या फिर एक न्यू स्टार्ट करते हैं। सर डोसी मिल्क फार्म है, डोसी फार्म शायद आपने सुना होगा, एक मिल्क ब्रांड है जो अपना ऑनलाइन मिल्क बेचता है। तो हम क्या करते हैं, जहां पे इनका मिल्क जाता है और वो मिल्क पैकेट्स होते हैं वो मंथली कलेक्ट करते हैं हर 2 तारीख को। कस्टमर्स को वॉच करके रखते हैं एंड उनके एक्सचेंज में उनको रिवॉर्ड्स देते हैं, जैसे कि 10% ऑफ दे दिया मंथ में मिल्क के लिए। ये ग्रोथ स्ट्रेटजीज है, टाइमलाइन, ये ट्रैक्शंस है, जितना हम बिजनेस अब तक कर चुके हैं, ये ग्रोथ, रेवेन्यू शो। यस, सोशल कंट्रीब्यूशन है, पेंसिल सब कुछ हमने एक विडो वुमेन्स जो है एनजीओ हमारे चंडीगढ़ में उनसे बनवाई है एंड ये हम बेचना भी स्टार्ट कर दिया है। अभी 1 जनवरी को मेरा न्यू प्रोडक्ट आ रहा है बीबीएस के नाम से, बाय स्क्रैप, मतलब स्क्रैप को टाटा करना और खरीदना स्क्रैप के बदले, बीबीएस के नाम से। इसमें क्या होगा कि कस्टमर्स हमें मंथली स्क्रैप सेल आउट करेंगे। इन केस कस्टमर ने 1000 रुपए का स्क्रैप सेल आउट किया है तो हम 1000 रुपए का उनको ग्रोसरी हर महीने देंगे। जैसे मिल्क चाहिए उनको, दही चाहिए, वो उससे डेली आएगी। ये टीम है हमारी। आप कौन से हो? ब्लू दुकान पे। यस। तो फंड्स कुछ इसलिए चाहिए हमें। आपकी रेवेन्यू कहाँ से आती है? सर जो हम स्क्रैप कलेक्ट करते हैं फैक्ट्रीज को सेल आउट करते हैं। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे अखबार का एक 12 रुपए किलो एग्जांपल, तो हम कस्टमर से 60 रुपीज केजी खरीदते हैं। अभी क्या होता है, जो 12 रुपए में कबाड़ी वाला घर से खरीदता है, उनके बीच में फैक्ट्री तक जाते जाते बीच में 5 से 6 ब्रोकर्स होते हैं। पेपर मिल्स खरीदती है उसको बल्क में, लास्ट में पेपर मिल्स खरीदती है, दोबारा पे पेपर, तो आप डायरेक्टली पेपर मिल को बेचते हैं। तो उसका रेट अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपीज केजी के आसपास, 16 मीटर 30 में बेचते हैं। देन देयर इज अ प्रॉफिट। तो स्क्रैप में आजकल आपका वर्क मेनली न्यूज़पेपर है? सर हर चीज है, मेटल, ई वेस्ट, न्यूज़पेपर।
तो अभी हमने कंसल्टिंग भी स्टार्ट करी है म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के लिए। उनकी स्वच्छ सर्वेक्षण होते हैं, उसके अंदर को रैंकिंग मिलती है सर्वेक्षण के बेसिस पे। द सेम बिजनेस जो हम कर रहे हैं, हमें अवेयरनेस ही करना होता है, तो हम एक जनरेट वहां से करते हैं। ई-वेस्ट में कुछ स्पेसिफिक प्लान कर रहे हैं? सर अभी क्या है कि ई-वेस्ट में पार्टनर कंपनी है मेरे पास, 3 वेस्ट के नाम से। देन हम अभी स्पेसिफिक में नहीं चाहते इसमें करना ई-वेस्ट में, अभी ज्यादा प्लान नहीं है। मेन है B2C कस्टमर्स के घर से हमने स्क्रैप उठाना एंड देन उनको फैसिलिटी देना। अगर मैं प्रॉपर ई-वेस्ट के चैनल में गया देन B2C वर्क नहीं कर पाऊंगा। नाम बंसी है। अभी रिसेंटली मुझे स्टार्टअप पंजाब से 3 लाख की ग्रांट मिली है एंड नेक्स्ट मंथ मेरी MSME में 15 लाख की ग्रांट आ रही है। It's to expand. स्टार्टअप का रेवेन्यू टोटल It's 47 47 अभी तक बनी है। Yes. और अभी काम करने वाले चंडीगढ़ में कर रहे हैं। चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला एंड लखनऊ स्टार्ट किया सर रिसेंटली अभी। तो कितने हाउस होल्ड कवर कर लेते हैं उसमें? सर मैंने 5 लाख लोगों को इम्पैक्ट दे चुका हूं अभी तक इस चीज से एंड 12,000 प्लस डाउनलोड्स हैं मेरे पास। नहीं इम्पैक्ट नहीं, मैं पूछ रहा हूं कितने घरों से, कितने हाउस होल्ड से तुमने सर उठाया? डेली 20 प्लस ऑर्डर्स आते हैं। हां, डेली 20 प्लस ऑर्डर्स है। 20 प्लस हाउस होल्ड एवरी डे। यस 20 हाउस होल्ड एवरी डे। तो एवरेज रेवेन्यू कितनी आई पर हाउस होल्ड? इट डिपेंड्स सर, कोई कस्टमर 10,000 का सामान बेचता है, कोई 1,000 का सामान बेचता है। ऑन एन एवरेज मेरे पास 2000 के आसपास स्क्रैप दिया जाता है पर ऑर्डर। पर ऑर्डर पर ऑर्डर 2000 रुपीस यस एवरेज। हम खरीदते हैं। फ्रॉम वन हाउस होल्ड, एक घर पर 1000 से यस 2000 यस महीने में। यस महीने में इट डिपेंड्स सर, 2 महीने में कर रहा है, 3 महीने में ऑर्डर कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी सर ये है कि 3 महीने के आसपास ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हमारा एवरेज टिकट साइज 10 केजी है। 10 केजी मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए। देन क्या 3 कप करते हैं, इससे कम उठाते ही नहीं। और 3 महीने में एक घर से 2000 रुपए का रेवेन्यू। यस सबसे ज्यादा क्या है आयरन। बाकी कंप्यूटर है इससे आप ये सर अभी ट्राई सिटी में कोई ऑनलाइन कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन जो लोकल कबाड़ी वाले हैं वो मेन कॉम्पिटिटर हैं और रोज घर के बाहर निकलते हैं, कस्टमर्स को लगता है कि शायद उनको बेच देते हैं। तो अभी अवेयरनेस की कोई लैक ऑफ अवेयरनेस है, इसके लिए हमें फंड चाहिए। we haven't done digital marketing. We have a team सर जो रेगुलर SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग करती है, लेकिन मेन फंड चाहिए ग्राउंड मार्केटिंग के लिए। हमारे टारगेट ऑडियंस है 30 से 40 की वुमेन्स। हमारी मम्मी घर में रिसेंटली स्क्रैप बेचती है ना, शायद मम्मी की बेचते पापा नहीं बेचते, वो शायद मम्मी का हमें लगता है कि काम For that you need to do offline marketing. यस बट आप अपने इनसे क्यों नहीं टाइप करते हैं? जितनी ई-कॉमर्स साइट्स हैं, इनके कार्टन्स जितने आते हैं, छोटे-छोटे कार्टन के लिए वो बड़े कार्टन्स बेचते हैं, वो पूरा ऐसे ही जाता है, कबाड़ियों पे जाता है। और उनका बहुत बड़ा इशू है ये कि इतने वेस्ट, और उनके आप उनसे क्यों नहीं टाइप करते कि जब भी डिलीवरी हो वो आप पिकअप करो उनका कार्टन्स, और फिर वो रिसाइकिल हो जाते हैं पूरे कार्टन्स। पंजाब में भी कितने कार्टन्स मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप पंजाब और हरियाणा ही कवर कर लोगे तो आपके कम से कम 40-50 हजार टन तो साल का खाली पैकेज मटेरियल यूज हो रहा है, वेस्ट जा रहा है। सर अभी क्या है, फ्लिपकार्ट और अमेज़न के बीच में आप कितना कार्टन खरीदते हैं, आपको मालूम अंदाजा है कुछ आपको? प्रॉब्लम इज वेयर टिकट साइज 10 केजी, एक कार्टन अप्रॉक्सीमेटली 300-400 ग्राम, 1 केजी का मैक्सिमम होगा। वो जो आते हैं डिलीवरी करते हैं उन्हीं को आप डेवलप करो कि वही पुराना कार्टन उठा के ले जाए। हम लोग के घर में, किसी घर में कम से कम फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी from all these e-commerce sites, whichever you take, not the big ones, right, will be about 3, at least minimum 4 times a month. 4 पे जाता है उनका डिलीवरी बॉय, वही पुराने कार्टन उठा के लाए और आपको दे दे। सर बात बोलना चाहूंगा, उसका पहली बैग इतना भरा होता है, ऊपर से वो स्क्रैप लेके आएगा तो कैसे मैनेज कर पाएगा? वो पैसा कमा रहा है ना, कैसे लेके आएगा? आपको क्या, वो तो इतना वैसे उठा रहा हो तो चट्टान लेगा, शाम तक तो खाली हो जाता है उसका बैग। क्या करते हैं, मुझसे हाउसों में ऐसे फेंक देते हैं। सर हम वही आदत पा रहे हैं कस्टमर, क्योंकि आप अपना लॉजिस्टिक सिस्टम बना रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है, आपको माल भी देगा, वो बताएगा भी, वो
वो उठाएगा माल और देख के आपको देके जाएगा। आप अपने कलेक्शन सेंटर बना लो, और चंडीगढ़ में हर सेक्टर में एक ही बना लो, वो गया उठाया उसने, वो आपके ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, आप उससे महीने का हिसाब रखो, आप दे दो उसको। You can also tie up with NGOs. NGOs आप जैसे हैं, बस the main point is हम कस्टमर्स का पूछना चाहते हैं, हम आउटसोर्स नहीं चाहते कहीं से लेना, जब तक कस्टमर्स को आदत नहीं है रिसाइकिल करने का, तो फायदा नहीं है। रिसेंट वो आराम से रिसाइकिल करेगा, अगर वो बोलेगा कि अपने पुराने कार्टन आपको दे दो, वो उसको ऊपर में दे देंगे, पैसे भी नहीं चार्ज करेंगे उससे। उससे कस्टमर को क्या फायदा? हाँ, कस्टमर्स को क्या घर फायदा? साफ हो रहा है। कस्टमर घर साफ हो रहा है, निकल रहा है। कितना जगह ले लेता है कार्टून। है तो हम भी साफ करते हैं। अगर टिप्स देने की जगह डोमिनोज के डब्बे जो अगर वापस ले ले, आप टिप देते हो उसको 10-12 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। बोलोगे ठीक है आप डब्बा ले लो, दैट्स अ टिप फॉर मी। रिटर्निंग ऑफ अ कार्टन इज अ टिप। It's a nuisance. High nuisance value. एन अमाउंट ऑफ टनेज यू विल गेट। आपका ठंडा पेपर मिल का नाम सुना आपने? हाँ, नचिकेता रुचिरा। हाँ, कितना टन स्क्रैप करते हो? हाँ, मेरा जाता था हर 2 दिन में 10 टन। 10 टन हर 2 दिन के बाद 10 टन जाता है उनके पास। हाँ, आपको रेडी कस्टमर बैठा है, वही आपको पैसे देगा ये रिसाइकिल करने के लिए। हाँ, या बीएनसी कर तो रहे हो, अच्छा है, बट आप 20 हाउस होल्ड में जाते हो अभी, आपको 200 हाउस होल्ड जाने में ना कितनी तकलीफ होगी आप समझते नहीं। जब तक आप इनोवेटिव नहीं बनोगे, B2C is not easy market. It's a very difficult market. You have to think very innovatively. You're in the right space of scraps and recyclables. So don't call yourself a scrap company. Call yourself a recycling company. तो अभी रिसेंटली हिंडाल्को से टाई अप किया हमने एल्युमिनियम कैंस के लिए, जो कि एल्युमिनियम कैंस होते हैं बियर के, कोल्ड ड्रिंक के, वो हम स्टोर करते हैं हिंडाल्को को सेल आउट करना स्टार्ट करते हैं। कॉल करते हैं टाइप्स के कॉल करते टाइप्स के हमें सर मतलब 3 हिंडाल्को से सामने से ऑफर आया था एल्युमिनियम कैंस के लिए। इनका एक ईपीआर होता है, हर कंपनी को करना होता है, उनको जितना अमाउंट उनका मार्केट में जा रहा है उतना ही उनका कुछ 20% 10% रेडी करना होता है, तो दिखाना होता है पेपर। तो उसके लिए हम हेल्प करते हैं। अभी कैपिटल को एडवाइजर है तो डिपेंड सर। अभी रिसेंटली हमने चाय छोटा बात से भी टाइप करने की ट्राई करी है। जो भी चाय के कुल्हड़ होते हैं उसमें प्लांट्स लगा के कॉर्पेट में देना, मतलब हर कॉर्पेट सीड्स के ऊपर कुल्हड़ के अंदर मिट्टी डाल के प्लांट लगा के रखने के लिए कहीं से ज़्यादा नहीं सर। अभी तो आउटलेट से कर रहे हैं, कुछ आउटलेट्स रेडी हैं, कुछ प्रोडक्ट मार्केट में जा चुके हैं। जैसे 3B2 की मार्केट है मॉर्निंग, वहाँ पे फ्रेंचाइजी है, वहाँ से हम सामान लेते हैं। कब निकले कॉलेज से? 2020 कौन सा कॉलेज से? CGC लाइन फ्रॉम मॉर्निंग when I was in 3rd year started। खुद से पैसा लगाया था, सारा लगा दिया around 10 lakhs। पैसे देके ट्यूशन पढ़ाए सर। हाँ, पहले 3 साल ट्यूशन पढ़ाई है, खुद रेडी में जाके सामान लेके आया हूँ। और लेबर चेंज करती थी, स्टार्टिंग में मैंने अपना वेयर हाउस लिया, लेबर